Hello dear ones, welcome back to my channel. Those who are new, hi, my name is Fareen. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है और सच बोलूं तो मुझे थोड़ी शर्म भी आती है बाहर इंग्लिश में बात करने के लिए. डोंट वरी, मैं हूं ना. लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश टुगेदर. मैं ब्लैक रीड करूंगी, आप रेड रीड करना. मेक श्योर यू रीड लाउडली. अगर आप लाउडली रीड नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो थोड़ा जोर से रीड आउट करने की. इससे आपकी इंग्लिश काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. The topic is two friends, you and me, discussing about a road accident. Let's get started. Have you ever been in any traffic accident? What happened? How did you feel then? Who was involved in the accident? Did the insurance company pay for repair service? Did you need a lawyer? Were you sent to the hospital after the accident? Do you have a driving license? Why should people obey traffic regulations? You were awesome. Good job. Let's reverse the conversation. अब मैं रेड रीड करूंगी, आप ब्लैक रीड करोगे. You go first. Yes, 3 years ago. I was hit by a car while crossing the road. I felt really terrible because of my injuries. The car driver, his family inside the car, and me. I was walking, so I did not require any car repairing services. I hurt my lower back just a little, so I didn't call a lawyer. No, we didn't want to get the police involved. No, the injury wasn't really serious. Yes, I do. I always keep it in my purse.
to protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights, and stay in the appropriate vehicle lanes. You did excellent job. Thank you so much for watching the video till the very end. अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के वीडियोस और लेकर आऊं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें प्रैक्टिस विद फरीन। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनो, कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय।